CHSE 2026 रे जो प्लस टू छुआ मानकर एग्जाम हेबार अच्छी एग्जाम डेट एमआईएल रहुची 18 फेब्रुआरी इंग्लिश 24 फेब्रुआरी फिजिक्स 28 फेब्रुआरी केमिस्ट्री 6 मार्च बायो 10 मार्च हिंदी संस्कृत 11 मार्च 13 मैथ एंड 16 आईटी रोज तेणु से तुमको प्रिपेरेसन करिया पड़िबो ए अनुसार बायोलोजी प्रथम सिलेक्टिव क्वेश्चन देखते ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ो ही पड़ो 100%। आज देखा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो कौन आंसर आसूची। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी ऑर्गन इट इज कॉल्ड ओभारी। ह्यूमन रो फीमेल रो रिप्रोडक्टिव माने सिस्टम प्रथम प्राइमरी ऑर्गन जहार ना कौन ना ओभारी एंड द सेकेंडरी ऑर्गन it is the duct system consist of fallopian tube and ureters and cervix vagina fallopian tube ये सब डॉक्ट को नहीं कह डॉक्ट सिस्टम प्राइमरी ऑर्गन ओभारी डॉक्ट सिस्टम एक्सटर्नल जेनेटल सिस्टम बा एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स एंड मामरी ग्लैंड ये सब को नहीं कि हमर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गठित। एबे देखिया ओभारी आर द प्राइमरी female sex organ that produce female gamete called ova। ह्यूमन रो प्राइमरी माने ह्यूमन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओभारी जहाँकि कौन प्रोड्यूस करे ओभा एंड सिक्रेट ओभारियन हार्मोन्स बा तार अन्य नाम होची सेक्स हार्मोन्स। ओभारी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल बा पेल्विक कैविटी रे प्रेजेंट है ऑन ईच साइड ऑफ द नियर द किडनी प्रति किडनी रो साइड रे प्रेजेंट है। Each ovary is an almond-shaped body about 3 cm long and 1.5 cm broad and 1 cm thick. Kidney रो shape होची 3 cm long, 1.5 cm broad and 1 cm thick. It is attached to the pelvic wall of the uterus called ligament. Wall सहित uterus wall सहित ovary गोटे जो माने membrane सहित लागि ताको कहबा हमें ligament. Ovary is covered by thin epithelium which include the ovarian stroma। ओभारी गोटे कभर है मेम्ब्रेन ताको नाम epithelium membrane। stroma is divided into two region। stroma कौन है ना दुईटी region में divided है। first is peripheral cortex and inner medulla। cortex एवं medulla द्वारा ओभारी रो stroma कौन है divide है। ovarian follicle is found in various stage of development of cortex। कॉर्टेक्स रे ही ओभारियन फॉलिकल्स माने कोन होंती ना डेवलपमेंट होची तो समझते कोन करिवो। एबे देखिया डक्ट सिस्टम डक्ट रे प्रथम डक्ट थिला फैलोपियन ट्यूब ए फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओभारी टू द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब कोन हेची ना एक्सटेंड हेची कोठो ना पेरिफेरी ऑफ द ईच ओभारी थारो यूटेरस पर्यंत हम जो पाइप को हम कहबा फैलोपियन ट्यूब। इट इज मस्कुलर ये होची मस्कुलर ट्यूब ऑफ अबाउट 10 to 12 centimeter long are long keeping 10 to 12 centimeter situated above and behind the urinary bladder। part of fallopian tube close to the ovary is funnel shape called infundibulum। ovary रो गुटे पार्ट जहाँकि fallopian tube जहाँकि ओभारी पाखरे अछि तार ना होची कोन infundibulum। edge of the infundibulum possess a finger like projection called fimbriae। fallopian tube रो कौन है ना एंड साइड रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अच्छी ता ना कौन फिम्ब्री। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑफ ओभम आर काम कौन ना ओभम को कलेक्टिंग करबा केते बेले ना ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। इनफंडिबुलम लीड्स इनटू ए वाइडर पार्ट। इनफंडिबुलम रो गुटे वाइडर पार्ट अच्छी जहाँ को ना ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कॉल्ड आम्पुला। इनफंडिबुलम रो वाइडर पार्ट ना हला आम्पुला। लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रो लास्ट पार्ट को हमें कौन कहबा ना जॉइंस विथ द यूटेरस इज कॉल्ड इस्थमस। एबे देखिबा यूरेटस इट इज एन इन्वर्टेड पियर शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर attached to the pelvic wall and supported the ligament। ये कौन होता है ना पियर शेप। the wall of the uterus has 3 layer। uterus रो wall 3टी लेयर द्वारा गठित। outermost or external layer is thin। outermost layer thin called perimetrium। तेणु outermost layer को कहा जिवो perimetrium। middle thick layer
of smooth muscle is called myometrium. Middle thick layer को कहा myometrium. Innermost glandular layer को कहा endometrium, which is lined the uterine cavity. The contraction of the smooth muscle of the myometrium ଯେତେବେଳେ contraction ହେବ are responsible for the expulsion of baby during parturition time ରେ ହିଁ ତମର smooth muscle myometrium ର କ'ଣ ହେବ contraction ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ. Endometrium undergoes the cyclic change during menstrual cycle. ଆମର ଯେତିକି ଥର menstrual cycle ହେବ ତାର cycling change ରେ endometrium କ'ଣ କରିବ ନା କାମ କରିବ. Uterus open into the vagina. Uterus କାହା ସହିତ କୋଉଠି open ହେଇଛି vagina through the narrow region called cervix. ତାର ନା କ'ଣ cervix. ଏବେ ଦେଖିବା vagina. It is the muscular tube like structure that open to the outside. ये कोठी ओपन ହେଇଛି outside को ओपन ହେଇଛି. Vagina is the partially covered by a membrane called hymen. Vagina रे ଗୋଟେ partially membrane cover ଥାଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି hymen. The cervix and the vagina together constitute the birth canal. Cervix एवं vagina दीटा को कौन ହେଇଛି ना मिसिकी कौन ହେଇଛନ୍ତି ना birth canal सृष्टि करଛନ୍ତି. The function of a vagina are to the receive the male gametes during insemination. vagina कौन काम करे insemination time रे male gamete को receive करिवो. serve the birth canal during parturition. insemination and parturition ले काम करिवो किए ना vagina. एबे देखे external genital. The female external genital include mons pubis, labia majora and labia minora, clitoris and hymen. ए पांचटा को नहीं कि हमारे female external genital गठित. Mons pubis is the क्यूसन माने गद्दी भलिया. क्यूसन like fatty tissue covered by the skin and pubic hair. এটা गोटे कौन गद्दी भलिया जहाँ कि फैटी एसिड एवं स्किन को pubic hair को नहीं गठित. It extend down as a pair of folded of tissue labia majora and surrounded by vaginal opening. ये कौन है ना फेसी फोल्डेड है जहाँ द्वारा labia majora गठित है. labia minora are pair of folded of tissue under the labia majora. labia majora under a pair of tissue folded है जिन तक कहजिबो labia minora. It also surrounded the vaginal opening. ए भी कोड opening है ना surrounded the vaginal opening. The labia minora includes the space posteriorly called vestibule. ताना कौन होची ना vestibule and another unit and form the conical projection called clitoris. ताको कौन कहया conical projection कहया clitoris. कोडी present अछि ना urethral opening ऊपरे. Hymen is the membrane that partially covers the vaginal opening. Hymen कौन करछि ना vaginal opening को partially कौन करछि covering करिछि. It becomes ruptured due to the vigorous physical activities or during the first coitus time रे hymen कौन है जो rupture है जो. एबे देखिए mammary gland. A human female has a pair of functions of mammary gland that consist of glandular tissue and various quantity of fat. mammary tissue कौन है ना गोटे फैट बा glandular tissue. Glandular tissue is the divided into 15 to 20 mammary lobes. केतरा lobe द्वारा कंस्टिट्यूट है ना 15 to 20. Each lobe contains clusters of cells. ताको कहा जिवो alveoli which open into the mammary tube. Mammary tube of each lobe joined into the form mammary duct. Mammary tube कौन है ना joint है कि mammary duct formation करिछि. Several mammary duct joined to form a wider mammary ampulla that is connected to the lactiferous duct through which milk comes out. mammary ampulla देखि milk कौन हबो बाहर को आसीबो. The milk is actually secreted by the cell of alveoli. Milk code secretion of alveoli रे and store the lumen of alveoli. एवं alveoli रे lumen ले कौन हबो से कौन हबो ना store हबो. या थिला होची human female reproductive system. समस्त को ए लॉन्ग क्वेश्चन को नोट खातर मेंशन करिया पड़िबो. सेति समस्त को वीडियो जी देखि तांको थैंक यू.